Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janvallabha Girivardhari Jaya Gopi Janvallabha Girivardhari Yashodanandana Prabhujana Ranjana Yashodanandana Prabhujana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janvallabha Girivardhari Jaya Gopi Janvallabha Girivardhari Yashodanandana Prabhujana Ranjana Yashodanandana Prabhujana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janvallabha Girivardhari Jaya Gopi Janvallabha Girivardhari Yashodanandana Prabhujana Ranjana Yashodanandana Prabhujana Ranjana Yashodanandana Prabhujana Ranjana
Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jayam Vishnupad Varmahamsa Parivjakacharya Asotar Sata Sri Srimad Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Anantakoti Vaishnav Vrind ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakti Vrinda ki jai. Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shamakund Radhakund Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Mayapur Dham ki jai. Jagannath Puri Dham ki jai. Gangamai ki jai. Chamunamai ki jai. Shrimati Tulasi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveta Bhakti Vrinda ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swaminati Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvishri Shushanivadi Pastate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
And we are continuing from the ninth chapter of the 10th canto. Mother Yasoda binds Lord Krishna. We'll be speaking on text number 8, I believe. Yes. That's what's up on the board? Number 8? Yes. Thank you. Ulu kalangre upari vivastitam markaya kadam dadatam shichi stitam hayangavam chauya vishankitekshanam niriksha paschat sutam agamach Chennai Ulukalangre upari vigastitam Ulukalangre upari vivastitam Markayat kamang datang sichistitam Markaya kamam dadatam shichistitam. Markaya kamang dadatang shichistitam Markaya Ayangavang chaurya vishankitekshanam Hayankavam chaurya vishankiteksharam. Ayangavang chaurya vishankitekshanam Hayankavam chaurya vishankiteksharam. Nirikshya paschat sutam agamachanai Nirikshya paschat sutamagachanai. Nirikshya paschat sutam agamachanai Nirikshya paschat sutamagachanai. Ulukalangre upari vivastitam Lukalangre uparivasatam. Markaya kamang dadatang shichistitam Markaya kamam dadatam shichistitam. Ayangavang chaurya vishankitekshanam Ayangavam chaurya vishankitekshanam. Niriksha paschat sutam agamachanai Nirikshya paschata sutamagachanai. Chant please. Ulukalangre upari vivastitam Markaya kamam dadadam shichistitam Hayanka chaurya vishankitekshanam. Nirikshya paschata sutamagachanai. Ulukalangre upari Parivivastitam Markaya kamam dadatang shichistitam Ayangavam charya vishankitekshanam Nirikshya Nirikshya paschata sutam agamachanai Ulukalangre upari vivastitam Markaya kamam dadatang shichistitam Ayangavam charya vishankitekshanam Nirikshya paschat sutam agamachanai Ulukalangre upari vyavastitam. Markaya kamam dadati shichistitam. Hayangavam chaurya vishankitekshanam. Nirikshya paschat sutamagachanai. Anyone else?
Ulokalangrairupadiyamavasthitam. Markaya kamang dadatam shiti Hayyangavam Charya chauravishankite Vishankitekshanam Nirikshya Paschat Sutamagamatschanai Ulokalangrairupadiyamavasthitam. Markaya kamam dadatam shishisthitam. Hayyangavam chauravishankite Nirikshya Pashat Sutamagamatchanai. Uluka Angre Ulokalangrer. of the mortar in which spices were ground, On the mortar on which spices were ground and which was being kept upside down. and was being kept upside down. Upari Upari, on top. on top. Vyavastitam Vyavasthitam, Krishna was sitting. Krishna was sitting. Markaya Markaya, unto a monkey. unto a monkey. Kamam Kamam, according to his satisfaction. according to his satisfaction. Dadatam Dadatam, delivering shares. delivering shares. Shichistitam Shujisthitam, situated in the butter pot hanging on the swing. situated in the butter pot hanging on the swing. Hayangavam Ayangavam, butter and other milk preparations. butter and old milk preparations. Charya Vishankita Chauravishankitam, because of stealing because of stealing, were anxiously looking hither and thither. was anxiously looking hither and thither. Ikshanam Aksharam, whose eyes. whose eyes. Niriksha Niriksha, by seeing these by seeing activities. these activities. Paschat Pashat, from behind. from behind. Sutam Sutam, her son. her son. Agamat Agamat, she reached. she reached. Shanai Shanai, very slowly or Very cautiously. very slowly and cautiously. Oh, Krishna, where'd it go? Translation. Krishna at that time, they can read up there? Yeah. Okay. Krishna at that time was sitting on an upside down wooden mortar for grinding spices and was distributing milk preparations such as yogurt and butter to the monkeys as he liked. Because of having stolen, he was looking all around with great anxiety, suspecting that he might be chastised by his mother. Mother Yasoda, upon seeing him, very cautiously approached him from behind. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Mother Yasoda was able to trace Krishna by following his butter-smeared footprints. She saw that Krishna was stealing butter, and thus she smiled. Meanwhile, the crows also entered the room and came out in fear. Thus Mother Yasoda found Krishna stealing butter and very anxiously looking here and there. Om Gyanamindasya Gananjana Shalakaya Chakshuramalitang Nena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Namo Vishtam Stapidam Yena Bhutale Swayam Upagaramayam Dadadi Swavadandikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shah Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Mitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Paran Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshware Drishabhanu Shate Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyo Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare Hare Hare. Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna at that time was sitting on an upside-down wooden mortar for grinding spices and was distributing milk preparations such as yogurt and butter to all the monkeys as he liked. Because of having stolen, he was looking all around with great anxiety, suspecting that he might be chastised by his mother. Very good suspicion. Mother Yasoda, upon seeing him, very cautiously approached him from behind. अनुवाद। कृष्ण उस समय मसाला पीसने वाली लकड़ी की ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और मक्खन तथा दही जैसी दूध की बनी वस्तुएं अपनी इच्छानुसार बंदरों को बांट रहे थे। चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे कि कहीं उनकी माता आकर उन्हें डांटे नहीं। माता यशोदा ने उन्हें देखा तो वे पीछे से चुपके से उनके पास पहुंची। So the first thing that struck me from reading this verse was it must have been a very big spice grinding mortar. तो पहली चीज जो मैंने ध्यान दिया वो ये थी कि वो बहुत बड़ी ओखली रही होगी। I mean, in most kitchens, a spice grinder is very small. You can hold it in your hand. तो कई जगह पे इतना छोटा पीसने वाला रहता है कि आप उसको हाथ में पकड़ सकते हैं। But this one was big enough that when it was turned upside down, baby Krishna could sit on top of it. लेकिन यह इतनी बड़ी थी कि जब उल्टा करके रखी गई थी तो उस पे जो बालक कृष्ण है वो बैठे हुए थे। So from this, I am deducting that Mother Yasoda cooked a large quantity of foodstuffs. तो इससे मैं अनुमान लगाता हूँ कि माता यशोदा बहुत अधिक मात्रा में रसोई किया करती थी। Otherwise, why have such a large grinding mortar for spices? नहीं तो भला इतनी बड़ी ओखली वो क्यों रखती? And then the next thing that caught my attention was how Krishna was, not only was he eating the foodstuffs himself, but he was distributing them to the monkeys. तो अन्य चीज जो मैंने ध्यान दिया कि भगवान कृष्ण स्वयं अकेले नहीं खा रहे थे बल्कि वो बंदरों को बांट भी रहे थे। Now, monkeys and Krishna have some things in common. और बंदर और भगवान कृष्ण में कुछ समान हैं। Both can be very naughty and mischievous. दोनों बहुत ही शरारती और बदमाश हैं। So there, and also what came to me was that there must have been a variety of clay pots hanging from the ceiling. और वहां पे बहुत सारे जो मिट्टी के बर्तन हैं वो छीके से लटके रहे हुए होंगे। Because Shukadeva Goswami is saying in this verse that Krishna was eating yogurt, he was eating butter, and he was eating different milk sweets. तो क्योंकि यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण दूध, दही और अन्य दूध से निर्मित वस्तुएं खा रहे थे। Now, no mother after cooking preparations will keep different preparations in the same pot like that. और कोई भी जो माता है अगर कई पकवान बनाती तो एक ही बर्तन में ही रखती है। So it appears that Krishna not only broke one pot, but he broke several of them. इसका मतलब ये कि भगवान कृष्ण एक ही नहीं बल्कि कई सारे जो बर्तन तोड़े। Now, having done that, he was also experiencing great anxiety. ऐसा करके वे बहुत ही चिंतित महसूस कर रहे थे। Now, what does God have to be anxious about? भला भगवान को क्यों चिंता करनी पड़ी? He is Atmaram. He needs nothing. He wants nothing. He's completely self-satisfied. वह आत्मा राम है, स्वयं पूर्ण संतुष्ट है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए रहता। But in relation to his devotees,
he engages in different pastimes. लेकिन भक्तों के संबंध में वे कई सारी लीलाएं करते हैं, And he does this to increase the pleasure of the devotees. और वे ऐसा भक्तों का आनंद बढ़ाने के लिए करते हैं. Because Krishna needs nothing, but Krishna likes when his devotees are pleased. क्योंकि कृष्ण को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यह उन्हें अच्छा लगता है जब उनके भक्त उनसे प्रसन्न होते हैं. Now we're trying to learn how to please the transcendental senses of Krishna. और हम भगवान कृष्ण की दिव्य इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं. By following the instructions of the Guru Parampara and the previous acharyas. गुरु परंपरा और पूर्ववर्ती आचार्यों के निर्देशों का पालन करके. Because we don't know how to approach Krishna. क्योंकि हमें ये नहीं मालूम भगवान कृष्ण की शरण किस प्रकार ली जाए. Not only do we not know who Krishna is, we generally do not even know who we are. हमको यही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण हैं, बल्कि ये भी नहीं पता कि हम स्वयं कौन हैं. So in order to learn about Krishna, we have to follow in the footsteps of the previous acharya. तो कृष्ण भगवान को जानने के लिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना पड़ेगा. And by doing this to the best of our ability, I was going to say perfectly, but no, it's not required to be perfect. तो अब जो उनके चरणों का अनुसरण अपने क्षमता के अनुसार सबसे अच्छे प्रकार से करके एकदम सबसे सिद्धि की अवस्था में पहुंचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रयास करने से ही. What Krishna as the super soul in our heart is looking for if we are trying our best. तो भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठ के देखते रहते हैं कि यदि हम अपना सबसे बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि नहीं. If we are giving everything that we have for the service and the pleasure of the Lord. कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से हम अपना 100% भगवान कृष्ण की सेवा में दे रहे हैं कि नहीं. And this simple thing gives great pleasure to Lord Krishna. और यही सिर्फ एक साधारण चीज भगवान कृष्ण को बहुत आनंद देती है. We are not required to do big, huge things. हमें कोई बहुत बड़ा कारनामा करने की जरूरत नहीं है. We simply have to try our best to utilize whatever resources we have to give pleasure to the transcendental senses of the Lord. हमें सिर्फ हमारे पास जो कुछ भी है सारे संसाधन को भगवान कृष्ण की सेवा में उनकी दिव्य इंद्रियों को प्रसन्नता करने के लिए लगाना है. Some of us may have crores and crores of rupees, some of us may have a few paisa. तो कुछ लोगों के पास करोड़ों करोड़ रुपए हो सकते हैं, कुछ के पास कुछ कौड़ियां पैसे ही हो सकते हैं. Someone may be very intelligent and someone else might be illiterate. कई लोग हो सकते हैं कि बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन कुछ अशिक्षित हो सकते हैं. Someone may be highly intelligent with multiple PhDs and someone may be uneducated. कुछ बहुत ज्यादा विद्वान हो सकते हैं, PhD की हो सकते हैं, और कुछ अनपढ़ हो सकते हैं. Every person, every living entity within that spectrum has the ability to please Lord Krishna by their activities. तो हर एक जीव जो इस पूरा मापदंड में आता है उसमें यह योग्यता है कि क्षमता है कि वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सके. And everyone has the ability to develop and engage in pure, unmotivated, uninterrupted, loving, devotional service. और सबके पास ये अधिकार है कि वह भगवान की अहेतुकी अप्रतिहता प्रेममयी सेवा में नियोजित हो सके. There are no material impediments to pure devotional service. भगवान की शुद्ध भक्ति में कोई भी भौतिक बाधा नहीं होती. It is not required that one have a certain level of education or a certain bank balance. ऐसा कुछ शिक्षा का मानक स्तर या फिर कोई बैंक में जो बैलेंस है वो नहीं चाहिए रहता. It is simply required that we humbly, sincerely, and submissively from our heart serve our spiritual master to try to please him. तो हमें बस यही करना होता है कि हम सरलता और विनम्रता से अपने गुरु का अनुसरण करते हुए भगवान को प्रसन्न करें. Yasha prasadad bhagava prasado yasha prasadad nakati kutopi. That by the mercy of the spiritual master one has been addicted by the mercy of Krishna. Without the grace of the spiritual master, no one can make any advancement. तो गुरु की कृपा से ही भगवान कृष्ण
की कृपा मिलती है, गुरु की कृपा के बिना कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। Now in that verse, two very distinctive and important words are used. इस श्लोक में दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग हुए हैं, Mercy and grace. कृपा और Grace. I'm sorry, I cannot translate that for you. When you explain it will be understood. Well, I'm going to ask that question. What is the difference between mercy and grace? मर्सी और ग्रेस में क्या अंतर है? Anyone like to? What did he say? He's saying two different. Kripa and Ashirvad. Kripa means mercy, and Ashirvad means benediction, blessing. Yeah, that's good translation. Two examples. An example of mercy can be seen when somebody, like in this example, baby Krishna, he knows he's done wrong, and he's afraid he's going to get chastised by his mother. And so he's hoping that his mother will be merciful and not chastise him. तो जो मर्सी यानी कृपा का उदाहरण है कि जैसे यहाँ पे भगवान कृष्ण ने गलती की है और उनको पता है कि उनको डांट फटकार पड़ने वाली है, लेकिन वो आशा करते हैं कि उनकी माता उन्हें क्षमा कर देंगी, तो ये कृपा का उदाहरण है। In a court of law, a person who has broken the law is hoping that the judge will be merciful on him. तो अदालत में अगर कोई आदमी ने कोई नियम कानून तोड़े हैं और वो सोचे कि जो न्यायाधीश उसे क्षमा कर देगा, so we can understand that one definition of mercy is not getting what we deserve to get. तो कृपा या मर्सी का मतलब कि हम उसकी आशा करें जिसकी हम आशा नहीं कर सकते हैं। And in these examples, what we deserve to get is punishment. और हमें उस हमारे कर्म के अनुसार उसके लिए कुछ सजा मिलनी चाहिए रहती है। And grace is kind of the opposite. और जो ग्रेस है वो पूरा उल्टा है। Grace is getting something we do not deserve, something beneficial, like Prabhu said, a blessing. तो ग्रेस का मतलब है कि आशीर्वाद जो कि हमें वह प्राप्त हो जिसकी हमें योग्यता ही नहीं है। So my question to you is, how do we get from our present position of conditioned soul to be able to engage in these pastimes with Krishna? तो अभी हमारी जो अवस्था है बद्ध जीवात्मा की, उसमें हम यह कैसे योग्यता विकसित करें कि हम भगवान कृष्ण की लीलाओं में भाग ले सकें? The whole purpose of the Srimad Bhagavatam is to attract the mind, the intelligence, and especially the heart of conditioned souls to Krishna. तो श्रीमद् भागवतम का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह जीवात्मा के मन, बुद्धि और हृदय को कृष्ण के प्रति आकर्षित करना है। But it's only when we are fully, completely pure and purified that we're able to actually enter the pastimes of the Lord with the Lord. और इसके माध्यम से हम पूरी तरीके से शुद्ध होकर भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। So it begins, I will talk about two different points. अब मैं दो मुद्दों पे बात करने वाला हूँ। There is a verse, Atha Shri Krishna Namadi Na Bhavet Graham Indriyai Sevan Mukhe Hi Jivada Svayam Eva Spratyada. I'm trying to find it here. Oh, you don't need to translate it. तो ये जो श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्रहम इंद्रिया सेवन मुखी ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदा। ट्रांसलेशन। तो इस श्लोक में ये बताया गया कि जो भगवान कृष्ण का नाम गुण है वो हमारी इंद्रियों के द्वारा से नहीं समझा जा सकता, लेकिन यदि हम उसकी सेवा करना चाहें जीवा से प्रारंभ करके तो यह स्वयं हमें प्रकाशित होने लगता है। I have the translation here. Therefore, material senses cannot appreciate Krishna's holy name, his form, his qualities, and his pastimes. When a conditioned soul is awakened to Krishna consciousness and renders service by using his tongue to chant the Lord's holy name and taste the remnants of the Lord's food,
the tongue is purified, and one gradually comes to understand who Krishna really is. तो कोई भी अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान के नाम रूप गुण लीला को नहीं समझ सकता, लेकिन यदि कोई भगवान की सेवा प्रारंभ करता है अपनी जीवा के माध्यम से शुरू करके भगवान का नाम लेकर और प्रसाद का आस्वादन करके, तो वह भगवान उसको भगवान के नाम रूप गुण ये सब प्रकाशित होते हैं. And the other major factor is hearing. और अन्य जो महत्वपूर्ण है विषय है वह है श्रवण. But Prabhupada says simple hearing is not enough. तो श्री प्रभुपाद बताते हैं यदि सामान्यतः ही श्रवण किया जाए तो वह पर्याप्त नहीं है. By simple hearing we mean just like listening to background music or some noise. We're doing something else with our consciousness, but we may be hearing one thing, but we're doing something else mentally. तो सिर्फ साधारण श्रवण का मतलब है कि जैसे कि पृष्ठभूमि में कोई आवाज चलती रही हो, उसमें हमारी चेतना ना लगी रही हो, हम कुछ और काम कर रहे हैं लेकिन साथ में सुन रहे हैं. Now, Srila Prabhupada says, and the previous acharyas concur, that when one is purified, we can see the Lord Krishna himself directly in every page of Bhagavatam. श्रील प्रभुपाद बताते हैं और पूर्ववर्ती आचार्य भी इसको पुष्टि करते हैं कि यदि हम शुद्ध हो जाएं तो भगवान कृष्ण को श्रीमद् भागवतम के पन्नों में देख सकते हैं. Now, how do we get to that point? और उस स्तर तक हम कैसे पहुंचे? Srila Prabhupada explains श्रील प्रभुपाद बताते हैं that we have to purify all of our senses. कि हमें अपनी सारी इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा. And this is not simply a theoretical statement, but we have to, every one of our senses, we have to be pure in the activity of that sense. तो ये सिर्फ एक सैद्धांतिक कथन नहीं है, हमको अपनी सारी इंद्रियों को शुद्ध करना है सेवा में लगा के. For example, with the tongue has two purposes. जैसे कि मान लीजिए आप जिह्वा को लीजिए, इसका दो उद्देश्य है. To taste, to eat, and to speak or vibrate. यानी कि आस्वादन करना और कुछ बोलना. So in terms of eating, Krishna says a yogi does not eat too much, he does not eat too little. तो खाने के मामले में भगवान बताते हैं कि अत्याहार नहीं करना चाहिए और कम भी नहीं करना चाहिए. And devotees are the topmost yogis. और जो भक्त हैं वो परम योगी होते हैं. And we also have the restriction on what we can eat. तो हमारे लिए इसमें भी कुछ रोक टोक है कि हम क्या खाएं. If we are cooking and eating at home, we have to make sure that we are using only approved of ingredients. तो यदि हम घर पे रसोई करके खा रहे हैं तो हमको ये निर्धारित करना होगा कि जो भी मार्ग जो भी बताया गया है शास्त्र में वही हम बना के खा रहे हैं. So the pure foodstuffs, pure ingredients, cooked with devotion, offered to the Lord. यानी कि हमारा जो शुद्ध खाना होना चाहिए, शुद्ध सामग्री होना चाहिए, उसमें भक्ति के साथ बनाना होना चाहिए और भगवान को भोग लगाया होना चाहिए. We don't eat too much, we don't eat too little. ज्यादा और कम नहीं खाना चाहिए. We eat at the proper time of the day, whether it's breakfast, lunch, or dinner. चाहे जो सुबह दोपहर रात का खाना उसको ठीक समय पे खाना चाहिए. We eat in a proper atmosphere so that we can honor the Lord's prasad. और एक सही वातावरण में आस्वादन करना चाहिए जिससे हम उसे उचित सम्मान दे सके. Bhaktivinoda Thakur prays in his prayer to prasad that by honoring the Lord's prasad, I conquer over all worldly illusions. तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक प्रार्थना में बताते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रसाद का आस्वादन करने से मैं सारे भौतिक जंजालों के ऊपर उठ जाता हूँ. He doesn't say by eating the Lord's prasad. वो बोलते हैं खाने से नहीं, प्रसाद खाने से नहीं, Honoring. यानी कि सम्मान करने से प्रसाद. So what does that mean? That we have to be very grateful and appreciative and feeling gratitude in our heart that Krishna is so kind, our spiritual masters are so kind that they have given us this Bhagavad prasad. तो हमें भगवान के प्रति बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं और हमारे गुरु महाराज इतने दयालु हैं, उन्होंने हमें कृष्ण प्रसाद दिया है. So by engaging our tongue in terms of eating along those parameters, we can purify our sense of eating.
तो इस प्रकार से हम अपनी जीवा को नियोजित करके अपनी जीभ को हम शुद्ध कर सकते हैं. And if you similarly analyze the activities and functions of all the different senses, we can understand what we can do and what we should not do. तो आप यदि अपनी अन्य इंद्रियों के कार्यकलापों का विश्लेषण करें तो आप यह उसमें समझ सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए. So when all of our different senses become purified by restriction and by proper engagement, then they will be purified. तो यदि हमारी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएं उसमें उचित रोक टोक लगा के और सही काम करके तो वे सब शुद्ध हो जाएंगी. When all of our senses are purified, our mind becomes calm, pacified, and eventually it will become also pure. तो जब हमारी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो हमारा जो दिमाग है, मन है, वह पूरा प्रशांत हो जाता है और हम शुद्ध हो जाते हैं. And when our mind is calm, peaceful, and pure, then the intelligence can also become the same way. तो यदि हमारा जो मन है वह शुद्ध और शांत हो जाता है तो बुद्धि भी उसी का अनुसरण करती है. And when the intelligence is purified, then we can directly see and hear the Supreme Personality of Godhead. और यदि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती तो हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देख सकते हैं, सुन सकते हैं. So we have to mold our life in such a fashion that we can purify all of our different senses. तो हम अपने जीवन को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि हम अपनी सारी इंद्रियों को शुद्ध कर सके. And this is a big struggle. तो ये एक बड़ा संघर्ष है. We have to constantly fight against our uncontrolled mind so that our senses are restricted. तो यानी कि हमें हमेशा अपने अनियंत्रित मन के साथ एक जंग लड़ना है जैसे हमारी इंद्रियां नियंत्रित रह सकें. And when our senses are fully restricted and properly engaged, then the mind will no longer hanker after sense gratification. तो और यदि हमारी सारी इंद्रियां पे सही रोक टोक लगी है और सही दिशा में भी नियोजित हैं तो हमारा मन कोई भी इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं भागेगा. So when we purify our mind, our senses, our mind, and our intelligence by restriction and proper engagement, then our mind becomes our best friend. तो यदि हमारा जो मन है वो सही इंद्रियों के सही नियोजन से और उस पर सही रोक टोक से शुद्ध हो चुका है तो हमारा मन सबसे परम मित्र बन जाता है. And instead of our mind fighting with us all the time, I want to go to Mongol Aarti. Nah, stay in bed, the mind says. Don't do that. It's so nice and warm and comfortable in here. You can go see the deities later. तो हमारा मन हमेशा हमारे साथ लड़ाई करता है. जैसे कि जब मंगला आरती के समय जाना होता है तो मन बोलता है नहीं मत जाओ, यहाँ पे बिस्तर में कितना आराम है, भगवान का तो बाद में भी दर्शन हो जाएगा. Then our mind will become our best friend and it will help us to become Krishna conscious. लेकिन शुद्ध होने पे हमारा मन हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा और वो कृष्ण भावनामृत बनने में हमारी मदद करेगा. And when our mind is Krishna conscious, our intelligence is purified, then we can engage in the pastimes of the Lord. यदि हमारा मन कृष्ण भावनामृत में हो चुका है और बुद्धि शुद्ध हो चुकी है तब हम भगवान की सेवा कर सकते हैं. We will be able to see and experience and hear Krishna from every page of the revealed scriptures. तब हम जितने भी जो शास्त्र हैं उनके माध्यम से भगवान कृष्ण को देख सकते हैं, सुन सकते हैं. When we look at the deities in our purified consciousness, we will not see a marbled deity. जब हम शुद्ध चेतना से शुद्ध बुद्धि से भगवान का दर्शन करेंगे उस अवस्था में तो हम इनको एक पत्थरों के विग्रह के रूप में नहीं देखेंगे. This is Srimati Radharani and Madan Mohan directly, personally standing before you on this altar. तब आपको व्यक्तिगत रूप से श्रीमती राधा रानी और मदन मोहन जी इस ऑल्टर में खड़े हुए दिखेंगे. But because our senses are not purified, we have to be able to approach Krishna in a fashion that is just suitable to our conditioned nature. तो चूंकि अभी हमारी इंद्रियां भी शुद्ध नहीं, इसलिए हमें भगवान कृष्ण की इस प्रकार से शरण लेनी है जिस प्रकार से जो हमारे बद्ध स्वभाव के अनुसार अनुकूल हो. Atha Shri Krishna Namadi verse again. That with our materially contaminated senses, we cannot appreciate the name of the Lord, the Lord's form, the Lord's pastimes,
we cannot appreciate them. तो भौतिक कल्मश से दूषित इंद्रियों से हम भगवान के नाम रूप गुण लीला को नहीं समझ सकते। So these are practical steps that every one of us must take in order to purify our consciousness and become Krishna conscious. तो यह कुछ व्यवहारिक कदम है जो हम सबको लेना चाहिए जिसमें अपनी चेतना को शुद्ध करके कृष्ण भावनामृत बन सके। And when we are fully Krishna conscious, we will be able to appreciate so deeply and so fully these intimate loving pastimes of Lord Krishna as explained in the Srimad Bhagavatam. यदि हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं तो हम भगवान जो भागवतम में भगवान कृष्ण के जो प्रेम में लीलाएं हैं उनको हम पूरी तरीके से समझ सकेंगे और उनकी सराहना कर सकेंगे। Now that does not mean that we should wait to hear these pastimes until we become purified. तो इसका मतलब ये नहीं कि जब तक हम शुद्ध हो जाए तब तक हमें इंतजार करना चाहिए कि तब हम उस अवस्था में इसका श्रवण करेंगे। Because if we wait, we will never become purified. अगर हम ऐसे इंतजार करते जाएंगे तो हम कभी शुद्ध नहीं होंगे। So this is a very beautiful pastime of the Lord in the form of a baby, and He is simply trying to give transcendental pleasure to His mother. तो ये भगवान कृष्ण का एक बालक के रूप में बहुत ही बढ़िया लीला है जिसमें वो अपनी माता को दिव्य आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं, along with just a little bit of anxiety. सिर्फ उसमें थोड़ा सा चिंता भी है उनको। Oh, Krishna. Okay, I will stop there. आज के प्रवचन को यहीं विराम देता हूँ। Anyone have any reflections, questions, comments? कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी कर सकते हैं। Speak slowly, please. Hare Krishna. Louder. Hare Krishna. So you were mentioning about the eating and honoring prasad. So you made the difference that honoring prasad means having proper consciousness by taking prasad. So say we have proper consciousness, but we take prasad, up to the neck. So it is not the thing that we don't keep. We have not taken less prasad, we have not taken More. prasad. Yes. So what is the difference between honoring and eating, basically? The difference between honoring and eating is a difference of consciousness. If someone is simply eating, they're consuming, they are on the level of a sense enjoyer. As opposed to taking the Lord's prasad as a service to the Lord. तो प्रश्न ये था कि प्रसाद को खाने में उसकी सेवा करने में क्या अंतर है। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रसाद को खाना यानी कि एक इंद्रिय उसका भोग करने की इच्छा से करना है, और लेकिन प्रसाद की सेवा करना यानी कि वो भगवान के प्रति प्रसाद का सम्मान यानी कि उसकी भगवान के प्रति एक सेवा के माध्यम से उसको लेना है। Now the purpose of life is to enjoy. So why can't we enjoy eating? तो अभी हम ये सोचते हैं कि हम किस प्रकार से भोग करें, तो हम उसको खाने के मामले में लगा देते हैं। Srila Prabhupada gives, actually it's Sukadeva Swami, I believe, in pages of Bhagavatam, he speaks about 4 animals: dogs, hogs, camels, and asses. तो श्रीमद् भागवतम में कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधे की बात आती है। And these 4 animals are specific, they are intentionally selected. और इन चारों जानवरों को विशेष रूप से चयन किया गया है। For example, a hog and a dog will eat any damn thing. जैसे कि कुत्ता और सुअर कुछ भी सड़ी चीज खा सकते हैं। We have to make sure that we are restricting ourselves so we do not do that. तो हमें ये ध्यान देना है कि हम अपने पे कुछ बंधन लगाएं कि हमें क्या खाना है। And if we are eating in a mood of sense gratification, and a hog is also eating abominable things in the same mood, our level of enjoyment and pleasure
is the same as the hog's level of enjoyment and pleasure. तो यदि हम भोग प्रवृत्ति के साथ खा रहे हैं और सुअर भी कुछ भी घिनौनी चीज उसी भोग प्रवृत्ति के साथ खा रहा है, तो हमारी जो चेतना है दोनों समान ही स्तर पर है. Just because we are in a human form of life, we may have MA, PhD, our level of enjoyment is the same as the animals. भले ही हम मानव शरीर में हो, हम MA PhD किए हों, लेकिन जो हमारा जो भोग का स्तर है वह समान ही स्तर पर है. So Bhagavatam says that one does not actually become a human being until they accept and follow the Vedic principles. भागवतम बताती है कि कोई तब तक मनुष्य नहीं बन सकता जब तक वो वैदिक सिद्धांतों का ना पालन करे. So when we go out the gate, there are many animals that have forms just like us. तो बाहर जब हम जाते हैं गेट के पास, तो हम देखते हैं कि कई सारे जो जानवर हैं, लेकिन उन्होंने अभी मानव शरीर में हैं. And these are not my words. These are the words of Bhagavatam, Shukadeva Goswami. ये मैं नहीं, ऐसा श्रीमद् भागवतम कह रही है. So the difference between two-legged animals and actual human beings is that when we accept and work on the work means live by the guidance of the Vedic principles, we're actually human beings. तो द्विपद पशु और मानव में यह अंतर होता है कि यह है भेद है कि जब हम वैदिक सिद्धांतों को समझें और उनके आधार पर जीवन अपना जिए. So when we're sitting down for prasadam, we have to have the proper consciousness. It begins with gratitude. My dear Lord, you are so kind. My dear Guru Maharaj, you're so kind. You've allowed me to be here and have this nice prasadam. तो प्रसाद का सम्मान करते हुए, सेवा करते हुए हमारी चेतना बहुत अच्छी होनी चाहिए और कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान कृष्ण और मेरे गुरु आप इतने दयालु हैं कि आपकी कृपा से हमें यहाँ प्रसाद मिल रहा है. And when we're first coming to Krishna consciousness, Srila Prabhupada encouraged, eat up to here. तो जब हम नए नए आए थे कृष्ण भावनामृत में, तो श्रील प्रभुपाद बता रहे थे अपने सिर तक खा लो पूरा. Now, did Srila Prabhupada want us to overeat and engage like that? लेकिन श्रील प्रभुपाद ये भी क्या, अगर ज्यादा खाते हो तो उस हिसाब से सेवा भी करो. Yes and no. प्रभुपाद चाहते थे कि हम ओवर ईटिंग करें. अच्छा, क्या प्रभुपाद चाहते थे कि हम अत्याहार करें? Srila Prabhupada wanted us to be completely full with Krishna Prasadam so that we would not be hankering for non-prasadam. तो श्री प्रभुपाद इसलिए चाहते थे कि हम पूरा प्रसाद से परिपूर्ण रहें, जैसे हम किसी दूसरा बाहर का खाने की अभिलाषा ना करें. But that does not mean that after 10, 15, 30 years in the movement that we should still be eating up to here. इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम 10, 20, 30 साल से आंदोलन में अभी भी हम यहाँ तक खाएं. If you do, you will be like me and spending time in the Ayurvedic clinic. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आरोग्य निकेतन जाना पड़ेगा. Even if you overeat on Krishna Prasad, it is not good. अगर आप कृष्ण प्रसाद भी अत्याहार करते हैं तो अच्छा नहीं है. Even if you overeat on Mahaprasad, it is not good. यहाँ तक कि महाप्रसाद भी अत्याहार ठीक नहीं है. A yogi does not eat too much and does not eat too little. योगी ज्यादा और कम नहीं खाता है. Srila Prabhupada said in a lecture that diabetes is caused by eating too much. श्री प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं कि जो मधुमेह है वो ज्यादा खाने से होता है. And he didn't say eating too much sugar, eating too many sweets. He said eating too much. वैसा नहीं बोलते कि ज्यादा मिठाई खाने से, बल्कि बोलते हैं ज्यादा खाने से ही हो जाता है. And tuberculosis is caused by not eating enough. और ट्यूबरकुलोसिस होता है बहुत कम खाने से. So either way, too much, too little will create an imbalance in our body, which will give opportunity for diseases to fructify. तो ज्यादा और कम खाना से हमारे शरीर में असंतुलन होगा और उससे हमें बीमारियां आ जाएंगी. Okay? Any other reflections, questions? Today is also the disappearance day of Madhvacharya, and I was asked to speak something on him, which is very difficult for me because I don't know anything about him. So I looked up some articles this morning during japa time. If you want to translate that, go ahead. Otherwise, मध्वाचार्य की आज तिरुभाव तिथि है.
तो उनके बारे में भी हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। So Madhvacharya Prabhu, he was born some 1,000 years ago in southern India near the present-day city of Mangalore. तो मध्वाचार्य का आविर्भाव आज से करीब 1000 साल पूर्व मंगलोर शहर के पास हुआ था। Even from a child, he was extraordinarily remarkable in his physical abilities. तो बचपन से ही उनमें बहुत ही अद्भुत शारीरिक क्षमताएं थीं। He was immensely strong. वह अत्यधिक बलशाली थे and immensely renounced. और बहुत ही वैरागी भी थे। He took sannyas at the ripe old age of 12. वो सिर्फ 12 वर्ष की कोमल अवस्था में ही संन्यास ले लिए। You know what ripe old age means? But I said young age. But I translated as young age 12 years. Yeah, okay, whatever. He traveled around India preaching in different times. वह अलग अलग समय पे अलग अलग स्थानों पर प्रचार किए। He went to Badarak ashram at least twice. वो बद्रिक आश्रम 2 बार गए। He wanted to meet Vyasadev. वे श्रील व्यासदेव से मिलना चाहते थे। Madhvacharya Prabhu had written a commentary, I believe, on Bhagavad Gita, and he wanted to share it with Srila Vyasadeva to make sure that it was correct and get his feedback and input. तो मध्वाचार्य प्रभु भगवत गीता पे एक टिप्पणी लिखे थे और इसको वो श्रील व्यासदेव से जांच करवाना चाहते थे कि वह टीका सही है कि नहीं। He had many disciples, many of which were sannyasis. उनके कई सारे सन्यासी शिष्य थे। And one significant pastime that comes to my mind एक जो बहुत अद्भुत लीला है जो मेरे मन में आ रही है is one time when he was meditating on the shore of the ocean. एक बार वो समुद्र के किनारे ध्यान लगा रहे थे। He saw a ship in the water that was in some difficulty. उन्होंने देखा कि एक पानी का जहाज समुद्र में फंसा हुआ है। And he was able to help give guidance to the captain of the ship to get the ship to shore safely. और उन्होंने इस जहाज के कप्तान को कुछ मार्गदर्शन किया जिससे वो समुद्र के तट तक आ सके। And so the captain of the ship was very grateful, and he offered him some gifts, whatever you would like. तो कप्तान जो बहुत कृतज्ञ था उनकी सहायता के लिए और बोला कि आप जो भी चाहें उपहार ले सकते हैं। And Madhvacharya didn't want anything for himself, but he saw that there was a big chunk of gopi chandan. तो मध्वाचार्य खुद के लिए कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि चंदन का बहुत ही गोपी चंदन का बहुत बड़ा लट्ठा था। And so he asked to have that. तो उसने कहा कि मुझे ये दे दो। Because gopi chandan is used for deity worship regularly. कि गोपी चंदन भगवान के विग्रह सेवा में इस्तेमाल होता है। So when this was taken off the ship and brought onto the land, suddenly it broke into pieces. तो जब उस गोपी चंदन के लट्ठे को उठाकर जमीन पर लाया गया तो वो अपने से 2 भागों में टूट गया। And within the gopi chandan was a beautiful form of Krishna in a murti. और उस गोपी चंदन के अंदर भगवान कृष्ण का एक सुंदर विग्रह था। And he wanted to build a temple for that deity of Krishna, but when it came time to move the deity, he got 30 strong men, and the deity was so heavy that 30 men could not move the deity. तो जब उस विग्रह के लिए एक मंदिर बनवाना चाहते थे और जब उस विग्रह को उठाने का समय आया तो 30 बलशाली व्यक्तियों के लिए भी वो बहुत भारी थी विग्रह उठाने के लिए। So Madhvacharya Prabhu rolled up his sleeves and went and he carried the deity himself. तो मध्वाचार्य प्रभु ने अपनी बाहें मोड़ी और खुद विग्रह उठाकर लेके चले गए। Because of the time, we will stop here. तो समय खत्म हो चुका है इसलिए यहीं पर विराम देते हैं। Madhvacharya Prabhu ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Yes, Gaurashakti Prabhu ki jai.
Thank you very much. Thank you very much. Sitting on the pillow helped. Oh yes. I saw Maharaj do Oh it yeah, when Maharaja he is gave doing class. this. So, oh, that's